Good evening to our viewers and welcome to this special show dedicated to caring for cancer patients during COVID-19. I am Kamal Narayan, CEO of ISW Council, and this is the first session in the series planned around caring for cancer patients living under the shadow of the pandemic. Of all the diseases a human being can fall to, cancer is considered to be the most dreadful. Sadly, India saw over a million new cancer cases in the last year, which is estimated to increase substantially this year too. The ongoing COVID-19 pandemic has come as a double whammy for many cancer patients who are among the most vulnerable as they need uninterrupted and often hospital centric treatment to reduce sufferings and prevent mortality. These patients are also living under the constant fear of getting infected by the coronavirus. This is because the medicine and treatments for cancer end up lowering the body's capability to fight infection. The fear of COVID-19 is keeping some cancer patients away from hospitals, even though we are amid the gradual process of unlocking and health system has largely resumed its usual operations. What are the problems we are facing when it comes to diagnosing cancer early and how we need to ensure an empathetic and effective care for those already diagnosed of it? We have with us Dr. Sajjan Rajpurohit, Principal Consultant, Medical Oncology and Center Head for Max Hospital. Dr. Rajpurohit is a well-known name in his domain. He was the unit head of medical oncology as Rajiv Gandhi Cancer Institute, New Delhi, and has keen interest in research. However, before I begin our conversation, I would request our online viewers today to keep sending their questions on the comment box, and we will try to answer most of them in the next 40 minutes. Also, like and comment with your feedback, and do share this special show on your wall to help many others who may get benefited with this information. So, Dr. Raj Purohit, welcome on this show. And let's begin today's conversation on how we can bring in better care for our cancer patients. So, Dr. Raj Purohit, how has been the impact of COVID-19 on cancer patients? We have seen some of the news where we saw that patients are struggling from hospital to hospital sometime, and also pandemic has kind of created some kind of disruption on the continuity of the care which you can get in a hospital or access to the hospital. So how badly it might have affected in terms of aggravating or the spread of the disease, or sometime leading to loss of life. Dr. Sajjan. Thank you, Kamalji, first of all, for this very nice interaction with you. And I strongly feel that there's a need for a program which discusses such important things. So COVID has been actually, I would say, once in a lifetime kind of a thing which we never thought would ever happen to us during our lifetimes. And especially once lockdown was enforced, all of us actually didn't know what to do, how to go about. We didn't know about what kind of a disease this is, how deadly this disease is. And I think last 4 months have actually made us much more wiser with respect to this disease. And initially there was a lot of suspicion, doubt, then there was a shock, and then there was concern that this might actually hit us in all aspects of our lives. And to be very honest, when lockdown was announced, people were practically almost locked down to their houses. And in fact, our patients who were on treatment for cancer also had immense pain and fear that they might actually end up having COVID because they are under treatment with cancer and they might have low immunities. And we really didn't know what this virus will do to the cancer patients. And first 3 to 4 weeks, we almost saw
10% patients. That means 90% patients were restricted to their houses. They were not able to come out. The families were very anxious. Even as doctors, we didn't know what to do for our patients. But now we're already more than 120 days beyond the time when we started with the COVID pandemic in India. And globally, now we know that there's not really much for us to worry as a population. Especially India has been quite lucky that the case fatality rates have been very low with COVID, with respect to all major economies, even developed worlds. And I think there are certain local, regional, as well as I would say biological reasons which might be responsible that COVID has not hit as bad in India compared to any other part of the world. Number one, though we are almost edging towards highest number of patients in the world, but still, if I've been working and we have a dedicated COVID hospital in our hospitals. So Max has been a kind of a pioneer in developing the protocols as well as new therapies like plasma therapy for COVID. And we have seen that our mortalities have really gone down well. And now most of the patients are able to be managed without even ventilators. So the good thing which has happened over the last 4 months is that the scare of COVID has actually decreased, though the number of cases have markedly increased. But still, I think most of them are really manageable. And if you ask me what has been the mortalities have been in the tune of 1 to 2% for sick patients. That means for each symptomatic patient, I think there are at least 5 to 10 asymptomatic patients. So among the symptomatic patients also, the mortalities are not more than 1 to 2%. So that is quite reassuring, number one. Number two, with respect to the cancer treatment, so first 21 days were challenging. Almost all the patients were restrained to their houses, were not able to come out, more so because of the restrictions and also a sudden bringing down of lockdown and a lot of fear about the unknown. But after 21 days, when we started had second lockdown, and then probably after we started the process of unlockdown, we have as doctors realized and motivated our patients to continue their cancer treatment, not stop their cancer treatment, because we realized that many of our patients who were even cancer patients did not do as bad as we thought with COVID. So that's one good learning with COVID, and I'm very happy that now after 4 months, almost all the patients we are able to continue their cancer treatments without delays and without much anxiety. But still, there are certain cancer patients, especially blood cancer patients or patients who are on severe chemotherapy drugs, which are likely to have a prolonged immunosuppression, are the ones we are still very, and we would like to be very more careful with them. We require frequent testing for them for COVID. Otherwise, all other cancer patients, we are not even doing routine COVID testing. So that's one thing which has changed over the last, I would say, 4 weeks now. But that's wonderful, doctor, and that's a very good development that most of the patients are now, coming to the hospital, and this very important. We would also like to tell to our audience that, cancer or any other important, these kind of critical diseases, they can't wait. So please delay your treatment, your visit to the hospital, and even when you need to go for a certain diagnostics. So it is important to know a disease like cancer on time, so that a right kind of medical intervention can be provided. Doctor, you said that while most of the patients are now getting that treatment and hospitals are able to provide that, is there any change of protocol in terms of treatment for cancer patients post COVID-19 in terms of ensuring higher level of patient safety and keeping especially in mind the COVID-19 spread? And as you rightly said, that there is the number has been increasing dramatically in the country, though it's good that we don't have the fear of that level, which may disrupt our day-to-day life, and especially for the important medical support which we need. So is there any change of protocol in treatments which you people are now following? Yeah, so there have been protocol changes which have happened. So especially with cancer surgeries to start with cancer surgeries. So we would get rapid testing done for cancer surgeries, and we only do cancer surgeries
if a patient is COVID negative. So if a person is COVID positive and has got cancer, then probably we'll start them with light treatment, which can be systemic or oral treatment, and wait for that patient to become seronegative and do cancer surgeries for such patients, because they are more likely to have lung complications and cardiac complications in surgical cases. So that's one thing which we really changed, and we evolved over time, that for all our patients, we required a mandatory COVID before surgery. That's number one thing. With respect to the patients who are requiring chemotherapies, we chose them very wisely, and we decided that we could decrease their hospital visits by changing the protocols, or we could, if we had an option of an oral drug which could be given for some time instead of an injection, then we could change over to oral drug for a period of 4 to 6 weeks to tide over that difficult situation. And with respect to radiation, radiation has not been affected that much because radiation is mostly a local treatment, and only patients with lung tumors or patients who have got tumors in the foot pipe or the head and neck areas had to be tested for COVID and then followed accordingly for radiation. So on a case-to-case basis, their treatment plans and protocols were modified so that there was a decreased chance of that patient getting COVID, number one, and if a patient has COVID, then to tide over the situation and come out of COVID and then start their definitive treatment for cancer. Doctor, we'll also switch to Hindi a little bit as our audience is definitely of understand both the languages well. So आपने कहा कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो because of their drugs intensity, there is a higher cases of or chances of immunosuppression, और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की वो कुछ ज्यादा इफेक्टेड हो सकती है. इस कंडीशन में डॉक्टर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को लगता है, और ज्यादातर कैंसर के पेशेंट्स को लगता है कि उनकी जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो शायद कंप्रोमाइज्ड होगी, और ऐसे में हॉस्पिटल की विजिट्स न सिर्फ पेशेंट्स बल्कि पेशेंट्स की फैमिली वाले भी कई बार डिले करते हैं कि because they have that fear of COVID infection. So what is your suggestion for them? How much care and precautions need to be there, but at the same time ये precautions और care कहीं ऐसा ना हो कि किसी चीज को और खराब करने की तरफ ले जाए. तो कहां तक स्पेशल केयर जरूरत है और कहां पर पेशेंट्स को डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करके या हॉस्पिटल विजिट करके अपने ट्रीटमेंट को रिज्यूम करना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए? बहुत अच्छा आपने मतलब क्वेश्चन पूछे, मल्टीपल क्वेश्चन से मैं एक एक करके सबको जवाब देता हूँ. तो पहला, जैसे आपने मुझे बताया कि सिम्टम्स कैसे हैं जिनको हमें घर में बैठ के इग्नोर नहीं करना है. तो अगर किसी भी इंसान को 2-3 हफ्ते हो गए हैं, उनके मुंह में छाला है, गले में छाला है, या उनको खांसी हो रही है जिसका कोई ऐसा कारण नहीं है, या उनको वजन में कमी आ गई है, उनके पिछले 4 हफ्ते के अंदर वजन जो है वो 2 से 3 किलो कम हो गया, उनके किसी भी हिस्से, शरीर के किसी भी हिस्से के अंदर कोई गांठ बन रही है, जैसे छाती में, ब्रेस्ट में गांठ बन रही है, टेस्टिकल्स में गांठ बन रही है, या शरीर के किसी हिस्से में गांठ बन रही है, उनके कोई किसी भी हिस्से से ब्लड आया है, जैसे बलगम में ब्लड आ गया उनको, या पेशाब में ब्लड आ गया, लैट्रिन के अंदर कभी ब्लड आ गया, या इसके अलावा जैसे उनके जो खाना है, खाना खाने की क्षमता में गड़बड़ हो गई, खाना अटकने लग रहा है, या उनको सडनली कोई बाउल चेंजेस हो गए हैं, ब्लैडर चेंजेस हो गए हैं, उनको लैट्रिन में कब्जी होने लगी. तो ये 3-4 हफ्ते से ऊपर अगर ऐसे कोई सिम्टम किसी को हो रहे हैं तो ये कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं. मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कैंसर के वैसे ही है, बट इनमें कैंसर की संभावना रहती है. तो देखो 2-3 हफ्ते अगर किसी को वैसे प्रॉब्लम हुई तो मेरा सजेशन ये है कि आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप कोविड से इतना ना डरें. मतलब आज देखो, आज अगर यही इंटरव्यू अगर आप मेरे से 2 महीने पहले करते तो शायद मैं इसका आंसर दूसरा देता, लेकिन आज की डेट में आपको जरूर मैं बोलूंगा कि किसी को वैसे लक्षण है तो वो थोड़ा सा हिम्मत करके हॉस्पिटल जाए, क्योंकि हॉस्पिटल ने भी अपने आप को अडॉप्ट किया है. जैसे कि मैक्स हॉस्पिटल, तो हमने जो कोविड एरिया है वो पूरा, आप ये मान लीजिए कि अलग से हॉस्पिटल बन गया है. अगर किसी को भी कोविड सस्पेक्टेड भी है तो उनके अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, फिर उनकी केयर, उनके आईसीयू सब कुछ अलग बनाए गए हैं. तो बड़े हॉस्पिटल्स में ये जरूर ध्यान रखा गया है कि आप लोग जो कोई सस्पेक्टेड कोविड है या कोविड से इफेक्टेड पेशेंट्स है उनके कॉन्टैक्ट में ना आए, पहली बात. दूसरा, अब हम सब लोगों को जागरूकता है कि मास्क
जब भी आप जाते हैं मास्क और सैनिटाइजर ढंग से पहने, और अगर आप N95 मास्क पहनते हैं तो जो ड्रॉपलेट रेट इन्फेक्शन है वो काफी कम हो जाता है। और हमने अपने पेशेंट्स को जब एग्जामिन करने का तरीका है उसमें बैरियर मेथड्स लेके आए हम लोग, हमने पीपी किट का इस्तेमाल किया। तो इन सब चीजों से काफी हद तक जो जिस पर्सन को जरूरत है उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हम हेल्प कर पा रहे हैं। तो एक तो चीज ये है। दूसरा, मैं थोड़ा ये भी आश्वासन देना चाहूंगा आप लोगों को कि कोविड जो है अब हम बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं डिजीज को। तो ऐसा नहीं है कि कोविड जो है, किसी को कोविड हो भी गया तो मतलब बहुत ज्यादा चिंता की बात है। कुछ ज्यादातर लोगों को इंडिया के अंदर जब कोविड हो रहा है उन लोगों को खुद नहीं पता चला कि उनको कोविड हो गया है। मतलब गवर्नमेंट उनको बोल रही है आपको कोविड हो चुका है, लेकिन वो जब टेस्ट करके आते हैं वो 15-20 दिन ठीक रहते हैं। और 90% तक लोगों को अगर सिम्टम है भी माइल्ड है, सिर्फ 10% लोगों के अंदर, स्पेशली उन लोगों के अंदर जिसके अंदर पहले से कोमॉर्बिडिटीज हैं, एज 50-60 साल से ऊपर है, सीवियर हाइपरटेंशन है, पहले से स्मोकिंग या सीओपीडी की हिस्ट्री है, तो जिन लोगों के अंदर हाई रिस्क है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है या और कोई ऐसे क्रॉनिक डिजीज है, तो उनमें प्रॉब्लम है। कैंसर के अंदर ऐसा, अब आप मुझे बोले कि कैंसर की वजह से कोविड का रिस्क बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे कैंसर्स में भी इम्यूनिटी शुरुआत के टाइम में ठीक ही रहती है, सिर्फ एडवांस कैंसर्स के अंदर ही इम्यूनिटी जो है खराब होती है। ठीक है। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे बीच में आपने। नहीं, यस यस, सो प्लीज कंटिन्यू डॉक्टर। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे हॉस्पिटल्स में प्रोटोकॉल्स बन चुके हैं जिसमें कि कोविड एरिया को नॉन कोविड एरिया से बिल्कुल अलग कर दिया गया। उनका जो एक तरह से पूरा एरिया जो है ना वो आइसोलेटेड है, और सारे हॉस्पिटल इस बात का ध्यान रखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या हमारे एम्प्लॉयज हैं और बाकी वो लोग भी इफेक्ट ना हो। तो हम अपनी चिंता करेंगे तो हम आपकी भी चिंता पूरी करेंगे, इस चीज से निश्चिंत रहें। और कोशिश यही रहती है कि जरूरत हो तभी हॉस्पिटल जाए। कभी कभी लोग छोटी मोटी तकलीफ पे भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको लक्षण बताया कि ये लक्षण अगर आपको हैं तो इन लक्षणों के अंदर कम से कम 2 से 3 हफ्ते में ऐसे कोई लक्षण है तो इसको प्लीज इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से मिले और जरूरत पड़ने पे जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हो गए या इमेजिंग टेस्ट हो गए या कोई एंडोस्कोपीज वगैरह है, उनको प्लान किया जाना चाहिए। आज की डेट में कोविड टेस्टिंग बहुत सिंपल तरीके से हो पा रही है, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हटा दिया है, तो बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आपको कोविड है कि नहीं है। तो 6 से 8 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी आ जाती है, तो मोस्टली वो भी रिएश्योरिंग होता है डॉक्टर के लिए भी, आपके लिए भी कि आपको कोविड नहीं है। तो आपका फिर जो ट्रीटमेंट है वो जैसे कोविड के बिना हम ट्रीटमेंट करते हैं उसी तरह के उसमें चला सकते हैं। This is very assuring, doctor, that you are saying that most of the hospitals have created a different infrastructure and have dedicated facilities for critical patients and the patients those like of cancer or any other serious diseases. So this is good, and I'm again would like to tell my audience also that they should definitely not delay any kind of hospital visit when they feel that there is something wrong, or if they already know that they are having something like disease like cancer. So definitely they should continue their treatments to the best possible manner. Doctor, since you have already given this information and kind of cleared the doubts of our audience that the COVID should not be a detriment in terms of going for or seeking care for cancer patients. We are seeing that India has been seeing a massive number of cancer patients, and which is increasing very fast. What kind of cancer cases we are seeing in India primarily, and what do you see as a causes, and what are the ways to prevent them? इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो कैंसर्स है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर है जो आपके हो गए गले के, मुंह के और ओरल कैविटी के। तो हेड एंड नेक कैंसर्स जो है वो इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर्स है। और अगर आप लोग देखते हैं एड्स वगैरह भी जो टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट की एड आती है, और इसका कारण, मूल कारण ये है कि इंडिया के अंदर हम लोग ना केवल तंबाकू को स्मोकिंग के रूप में यूज करते हैं, बट हम उसको चबाते भी हैं। तो काफी हिस्सों के अंदर जैसे महाराष्ट्र है, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, बिहार है, अपना महाराष्ट्र है, राजस्थान है, इन एरियाज के अंदर तंबाकू जो है गुटखे के रूप में या खाया जाता है। तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो मेल्स के अंदर है वो ये वाला कैंसर है, इस कैंसर है। और बाकी बड़ी आंख का कैंसर जैसे कोलोन कैंसर है, और वुमेन के अंदर जो है मोस्ट कॉमन कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर। ये कॉमन कैंसर्स है इंडिया के अंदर।
इनकी इनकी प्रिवेंशन कैसे पॉसिबल है, और क्या वो अपार्ट फ्रॉम टोबैको, जो आपने कहा कि हेड एंड नेक कैंसर या ओरल कैविटी के कैंसर में chewing tobacco can be an important contributor on that, but increasing number of cervical cancers, increasing number of breast cancer, what can be the probable causes for them, and what are the best prevention for it? तो देखिए, आपको ये मतलब मैं बताना चाहूंगी 40 to 50% कैंसर जो इंडिया में हो रहे हैं प्रिवेंटेबल है। ठीक है, तो पहले आते हैं मेल्स के अंदर। अगर मेल्स के अंदर हम टोबैको यूजेस को बंद करते हैं, पता जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, हम चाहेंगे ऐसा प्रोग्राम है जरूर हम करें टोबैको सजेशन पे, या टोबैको जो है किस तरह से हम टोबैको का यूज बिल्कुल बंद कर पाए, उस पर भी हम प्रोग्राम करना चाहेंगे। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट वो एक एलिमेंट है जो अगले 20 साल में हमारे कैंसर्स को बताएगा कि अगले 20 साल में कैंसर जो आज जितने हमारे यूजर्स हैं, वही लोग अगले 20 साल के बाद वो कैंसर के पेशेंट्स बनेंगे। तो टोबैको यूजेस अगर बंद कर दिया जाए किसी भी फॉर्म में, तो वो 40% रिस्क कम करता है ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट कैंसर्स की। ना केवल नाक कान गला के जो कैंसर है, हेड एंड नेक कैंसर हो गया, इसके अलावा लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेशाब की थैली का जिसे ब्लैडर कैंसर को बोलते हैं, बड़ी आंत का कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, विमेन के अंदर भी एंडोमेट्रियल कैंसर, एनल कैविटी का कैंसर। सो ऑलमोस्ट 13 डिफरेंट कैंसर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है टोबैको यूज से। तो ये बहुत ही सरल चीज है, लाइफस्टाइल की हैबिट की वजह से हो रहा है कैंसर। इसको अगर हम सब लोग मिलके ये ठान लें, स्पेशली एनजीओ जो जैसे आपके जैसे एनजीओ जो कि वर्क कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन लोगों के अंदर दें, और आपको ये जान के हैरानी होगी मैक्सिमम लोग जो टोबैको यूज करना शुरू करते हैं वो करते हैं हाई स्कूल में और कॉलेज के 2-3 सालों के अंदर, उसके बाद टोबैको की आदत नहीं लगती है। तो अगर हम इस तरह की कैंपेन्स एक्टिवली चलाएं तो एक तो हमें उससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, विमेन के अंदर बहुत अच्छी खुशी की खबर ये है कि जो नंबर 2 कैंसर है उनका, जिसका नाम है सर्वाइकल कैंसर, उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन आ चुके हैं। तो उसके वैक्सीन जो है वो अब 90% तक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो इंडिया में अभी 2022 तक जो वैक्सीन आ जाएगा 90% प्रोटेक्शन दे रहा है वो विमेन के अंदर। अगर उसको 9 साल से लेकर 25 साल की उम्र में 2 से 3 डोज लगा दिया जाए तो वो सर्वाइकल कैंसर को होने नहीं देगा। तो अच्छी बात एक तो सर्वाइकल कैंसर को लेकर ही है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, हम सब लोग जो है ब्रेस्ट कैंसर पे काम करते हैं, आप लोग भी इतना काम करते हैं। तो अगर मैमोग्राम किए जाए और टाइम पे अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम लोग करें तो उन स्क्रीनिंग प्रोग्राम से बहुत ही जल्दी पकड़ सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर जो है फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ऑलमोस्ट 100% क्यूरेबल है। इसके अलावा कुछ कैंसर का रिस्क बहुत कम हो रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हेपेटाइटिस बी कम होने की वजह से अब हेपेटाइटिस सी की नई दवाई आ गई, तो हेपेटाइटिस बी और सी के कंट्रोल की वजह से जो लिवर के कैंसर थे उनमें कमी आ रही है और अगले 10 सालों में काफी कमी आएगी। Thank you so much, doctor. So this is important, and then you have very, I think, prominently stressed upon the point that control of tobacco consumption is of paramount importance, because that one it's if we are able to control tobacco consumption itself, we can make a big difference on how much burden of cancer our society is facing. You mentioned about screening has been a very important tool for women cancer, women-related cancer, and breast cancer-related things, and identification of the patients at an early stage. And I think the same goes for most of the types of cancers. But during this COVID period, doing those kind of mass level of screenings and most of those preventive activities which used to happen, especially screenings in rural areas or in multiple parts of the country, that has got immensely, I think, compromised or almost stopped. So what do you see? Is it going to add to the number of patients at the advanced stage, as we may not be able to identify cases on early stage because of the disruption happened by COVID-19, or is there a way also to ensure that this important thing is not missing out? तो कोविड की वजह से 2 चीजें हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो चीज ये डेफिनेटली हुआ कि 3-4 महीने में डर की वजह से कुछ पेशेंट जो हैं हमारे डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट सीख नहीं कर पाए और उनका कैंसर एडवांस हुआ। तो ये एक चिंता की बात है और मैंने आपको बताया कि अब आगे ऐसे लोग ना करें, इसीलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं।
इस प्रोग्राम को करने का एक ही मकसद है कि लोग डरे ना कोविड से और अपने कैंसर के ट्रीटमेंट को डिले ना करें। तो ये तो हमारा मैसेज है अभी। अब एक चीज अच्छी भी हुई इसमें, अच्छी ये हुई कि बहुत सारे लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं कर पाए वो लोग लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारे लोगों ने, मेरे जानने वाले लोगों ने भी तंबाकू इसी वजह से छोड़ दिया है। तो ये एक अच्छी चीज हुई इस दौरान। और मेरी सभी लोगों से यही एक गुजारिश है कि आपने किसी भी वजह से अगर तंबाकू छोड़ दिया तो दोबारा जब अनलॉकडाउन हुआ तो उसको वापस ना पकड़े। तो ये दो चीजें हैं। मेरे को लगता है कि ये चाहता हूं मैं कि लोगों के बीच में ये जागरूकता आए कि एक तो कैंसर जिनको है प्लीज अपने ट्रीटमेंट को डिले ना करें, और जिन भाई लोगों ने अपना तंबाकू का सेवन बंद किया नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से, वो दोबारा ना शुरू करें। Certainly, Doctor, I think your message must be reaching to the people, and it's good. There has been so many positive outcome of this COVID-19 pandemic, and we as a, I think, human being and as a society should definitely look at those positive side and try to take them forward. And I think reduction in these addictive substances and our dependence on many such things is one important aspect. डॉक्टर राजपुरोहित, आपने लंग कैंसर की भी बात की और लाइफ स्टाइल से जुड़े बहुत सारे कैंसर्स की बात की। अभी रिसेंटली आपने देखा, पीपल आर स्टिल एक्चुअली shocked to get this news again, that our Bollywood actor and very popular actor Sanjay Dutt has been diagnosed of advanced stage of lung cancer. So what is your opinion on that? How serious it is, the fourth stage of lung cancer, and what do you blame these kind of situation, late diagnosis, lifestyle, or we have seen that lung cancer are increasing in our country. Is it only lifestyle, smoking, or the increasing pollution of our cities are also contributing to these increased number of lung cancers? एक तो देखो, आई थिंक संजय दत्त जी ने हमें बहुत मैसेज दिए हैं लाइफ में। बहुत सारे लोगों ने उनकी मूवी वॉच भी की सज्जू, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज ये पता चली कि हमें लाइफ में क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर हम बहुत ज्यादा सब्सटेंस अब्यूज करते हैं और लाइफस्टाइल जो है अगर हमारी थोड़ी इरेटिक है तो कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैंसर जो है, कैंसर एक्चुअली इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। तो ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि नॉर्मली होता क्या है, मतलब आपको थोड़ा बहुत मतलब बेसिकली हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं इस बात को कि इतने सारे लोग स्मोक करते हैं, उनको तो नहीं हुआ, हमें कैसे हो गया। तो बहुत सरल भाषा में अगर मैं बोलूं कि अगर लंग कैंसर है, लंग कैंसर जो है लाइफ टाइम के अंदर 100 में से एक आदमी को ही होगा। 100 लोग अगर 50 साल 60 साल के ऊपर के उम्र में होंगे तो उनको 1% को ही लंग कैंसर होगा अगर वो स्मोकर नहीं है। और कोई अगर स्मोकर है तो रिस्क जो है वो 20% बढ़ जाती है, मतलब उनमें 100 में से 20 लोगों को होगा। इसका मतलब ये रिस्क जो है 20 टाइम हो गया, कहां 1% को हो रहा जहां 20 लोगों को होगा। तो ना केवल कैंसर, इसके अलावा स्मोकिंग के जो और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें कि अगर 100 लोग स्मोकिंग करते हैं, हैवी स्मोकर है जिन्होंने 20 साल तक स्मोकिंग किया, रोज कम से कम 1 पैकेट स्मोकिंग करते हैं वो, तो उनके अंदर ऐसा देखा गया कि 40% लोगों के अंदर प्री मेच्योर डेथ होती है, मतलब उनके लाइफ के 10 साल तक कम हो जाते हैं, जिसमें 20 लोगों को कैंसर हो जाएगा, करीबन 10 लोगों के अंदर हार्ट डिजीज का चांस बढ़ जाता है, और करीबन 10% लोगों के अंदर स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये अनएक्सपेक्टेड जो इवेंट्स हैं ऐसे हो सकते हैं। तो आई थिंक मैसेज यही है कि स्मोकिंग जो है एक बहुत ही आई थिंक एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर जितना डॉक्टर, जितना आप जैसे संस्थाएं इसको एम्फसाइज करें कि ये कोई कूल चीज नहीं है। नॉर्मली इसको प्रोजेक्ट किया था कि बहुत कूल है, आप बहुत कूल लगते हैं इससे, तो वो कूल चीज नहीं है। वो यूथ में जरूर कूल लगती है, लेकिन जब कोई इफेक्ट होता है तो वाकई में पूरी फैमिली के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारी देश की इकोनॉमी पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये तो मैंने पहले भी आपको बोला कि ये इसको मतलब लाइफस्टाइल डिजीज की तरह माना जाए। बाकी हमारा जो ना केवल स्मोकिंग, इसके अलावा जैसे हम लोग रेडिएशन एक्सपोजर हमारा हो रहा है, पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है, स्पेशली आप और हम जैसे लोग जो कि दिल्ली जैसे महानगरों में रह रहे हैं। तो वहां पर ये मान के चलिए कि अगर आपका जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर वो 300 से ऊपर है, नॉर्मली यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर ही रहता है,
और 400 450 में अगर रहे तो उसका मतलब ये कि उस दिन आपने करीबन 6 से 8 सिगरेट पिए, इतना धुआं आप अपने अंदर ले लेते हैं। और अभी जो नए आपने नाम सुने होंगे PM 2.5, PM 10, इस तरह के जो पार्टिकुलेट मैटर हैं जो कि पॉल्यूशन की वजह से हमारे हवा को अशुद्ध करते हैं, वो भी देखे गए कि वो लंग कैंसर को कॉज करते हैं। तो मल्टी फैक्टोरियल है लंग कैंसर और उसके अलावा बाकी कैंसर भी, बट अगर लंग कैंसर को कम करना है तो उसमें स्मोकिंग और पॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Thank you so much, Doctor. We have got a question from a Facebook, audience also, that how much passive smoking, causes cancer. पैसिव स्मोकिंग आप ये मान लीजिए जैसे आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, मतलब इसको आम भाषा में अगर बोले, इसका मतलब आपके घर में धुआं है और अगर जैसे हमने बोला कि अगर जब सीवियर क्वालिटी लो होती है एयर की तो उसमें PM जो है 2.5 हो गया, वो काफी मात्रा में बढ़ जाता है, मतलब उसका जो क्वांटिटी होता है वो 5-7 सिगरेट के बराबर होता है। तो पैसिव स्मोकिंग का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान कहीं किसी जगह पे स्मोक करता है, आपने देखा होगा कि वहां पे वो जो स्मोक के पार्टिकल है वो चिपक जाते हैं दीवारों को, पर्दों को, तो बहुत लंबे टाइम तक भी वो स्मोक निकलता नहीं है वहां से। तो पैसिव स्मोकिंग भी आपको हर्ट करता है, डेफिनेटली नॉट एज मच एज एक्टिव स्मोकिंग, बिकॉज एक्टिव स्मोकिंग तो आप धुआं जो है सांस के अंदर ले रहे हैं खुद ही, और पैसिव में ये हो रहा है कि धुआं हवा में भर गया तो वो हवा सांस ले रहे हैं, तो ये इस तरह का प्रभाव पड़ता है, एक तरह से एयर पोल्यूशन के बराबर इनका रिस्क होता है। Thank you so much, Dr. Sajjan, and I'm sure that these information are very, very useful for patients and for general public also to prevent this dreaded disease. What is your, the mantra you would like to share with our viewers today to prevent cancer? What are the, maybe if we can say 5-10 things which we should definitely follow and which will help us reducing the chances of developing such kind of disease? पहला तो देखो, ऐसा देखा जाता है डॉक्टर्स बहुत बोरिंग होते हैं या फिर डॉक्टर्स डराते रहते हैं लोगों को। तो एक तो मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग खुश रहें, तो खुश रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। खुश रहने से स्ट्रेस कम होता है, स्ट्रेस कम होने से भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो पहला चीज तो ये कि लिव अ गुड, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि स्ट्रेस से ही लोग अल्कोहल, टोबैको, बहुत बार ऐसा होता है कि इसकी जो हैबिट होती है वो हैबिट फॉर्मिंग बन जाते हैं, मेनली बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस डेफिनेटली लाइफ में कम करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, सभी लोगों को पता है, इसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है कि तंबाकू का सेवन ना करें। अल्कोहल जो है वो सोशली लें, उसको रिस्पॉन्सिबली लें, और फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, खाने पीने पे अपने ध्यान दें। तो आई थिंक ये सब चीजें हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, और उससे कैंसर का जो रिस्क है ओवरऑल 60 to 70% कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, वैक्सीनेशन आ चुके हैं हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन आ गए हैं, अब नए और भी वैक्सीन आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगले 5-7 साल में बहुत अच्छे हमारे पास ऐसे प्रिवेंटिव चीजें भी होंगी जिनसे कैंसर को हम कम कर पाएंगे। Thank you so much. It has been, almost half an hour of our wonderful interaction, but we are getting some more questions from Facebook, so I will, ask a couple of them. Doctor, we have got a question that, हमारे घरों में अगरबत्ती का यूज बहुत कुछ होता है कई बार, तो इसको लेकर के भी ये कहा जाता है कि it also, contributes immensely in the indoor pollution. आपकी नजर में इसका कितना इम्पैक्ट है, और स्मोकिंग के कंपैरिजन में हाउ मच इट इज डेंजरस, बिकॉज इन सम होम्स इट इज वेरी रिलीजियसली यूज्ड एवरी डे। तो देखिए, जो टोबैको का स्मोक है ना, और जो अगरबत्ती का स्मोक है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है कि जो टोबैको प्लांट होता है उसमें जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं वो 64 के आसपास है, तो काफी ज्यादा कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती का धुआं भी सेफ है। देखो, कोई भी धुआं जो होता है जो पॉल्यूशन करता है वो सेफ नहीं है, बट हाँ, उसके अंदर जो कैंसर के जो कार्सिनोजेंस है वो कम है। लेकिन कोई भी इंसान अगर बहुत ही ऐसे मंदिरों में पुजारी लोग काम करते हैं या धूप वगैरह बहुत ज्यादा लोग जलाने का एक बोल रहे हैं, वो चीज जो है एयर पोल्यूशन की तरह काम करती है। तो आपको देखो समझना पड़ेगा, ज्यादातर जो बर्निंग है, जो नॉर्मल बर्निंग होती है, जो वुड की बर्निंग है, या जो आपका आप देखें एयर पोल्यूशन भी अगर आप देखेंगे तो मोस्टली क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रॉप्स बर्न होती है। उस दौरान क्रॉप्स बर्न होने से वो पार्टिकुलेट मैटर हवा में जाता है, और ये जो पार्टिकुलेट मैटर होता है ये जाके डायरेक्टली हमारे लंग्स के जो डीप एल्वियलस होता है, जो बेसिक यूनिट होता है लंग का,
वहां जाके उसको इरिटेट करता है। तो इनका भी कैंसर का पोटेंशियल है, बट डेफिनेटली मच लोअर देन स्मोकिंग। तो स्मोकिंग इज द मोस्ट हार्मफुल वे ऑफ एयर पोल्यूशन, बट देन अदर थिंग्स ऑल्सो ओवर टाइम कैन लीड टू कैंसर। अब ये डिपेंड करता है कि पर्सन की खुद की जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है। कोई भी कैंसर के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है एनवायरमेंट, सेकेंड है आपका खुद का जो आपका ये बॉडी का जेनेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, और तीसरा टाइम। तो कोई भी इंसान का अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, उनके जीन्स में म्यूटेशन होने के चांस ज्यादा हैं, और वो लंबे टाइम तक एक कोई कैंसर वाले एनवायरमेंट में रहेंगे, तो उनको कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। Thank you so much. I hope you have very effectively addressed the question. So now there is one question which I would like to ask before we close today's session, and this has also come from our Facebook viewers. How much are the chances of survival for a patient who have been diagnosed with a fourth stage or advanced stage lung cancer? I think this is connected with my previous question also, but this is what our audience want to understand. Very vital, and in fact कल जब हमने भी सुना संजय जी के बारे में, तो मतलब क्योंकि उनकी मदर को भी देखो आप, उनकी मदर को भी कैंसर हुआ था, उन्होंने टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट में अपने मदर के नाम पे उन्होंने वार्ड बनवाया, और बहुत उन्होंने काम किया है कैंसर के ऊपर, और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को उन्होंने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया, क्योंकि उनके फादर साहब थे। इन्होंने खुद भी पर्सनली बहुत कैंसर पेशेंट्स की हेल्प की। तो पहले तो मैं खुद भी चाहूंगा कि आई आल्सो विल लाइक टू प्रे फॉर संजय दत्त जी दैट ही गेट्स वेल सून। अब रही बात ये कि स्टेज 4 लंग कैंसर में कितना सर्वाइवल है, तो आज से 20 साल पहले तक जो सर्वाइवल था वो 3 to 6 मंथ होता था, लेकिन अब जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो काफी एडवांस हो चुका है, और काफी सारे हमारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो अगर स्टेज 4 में भी तो 5 साल निकाल रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास नई दवाइयां आ गई हैं, टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं, इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैंसर का एग्जैक्ट टाइप कौन सा निकलता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देन अच्छी बात यह कि ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छी अवेलेबल हो गई है, तो मैं आशा ये करूंगा कि उनके लिए अच्छी दवाइयां निकलें और वो बहुत अपनी जो नॉर्मल लाइफ है वो जी पाए। Thank you so much, Doctor. It was wonderful speaking to you. With this, we would be concluding our session. So here we had Dr. Sajjan Rajpurohit from Max Hospital answering your questions on cancer care and prevention. If you have more questions, you can send them through WhatsApp. To use it, you can click on WhatsApp button on our page. Also, don't forget to follow us to stay updated on all the information that concerns your health and well-being. This program was supported by Silpa Medicare Limited under its public awareness initiative. We will be back with another special show on cancer prevention and care during COVID-19 on Thursday, August 20 at the same time. We will keep bringing more experts to you who can answer your questions, help you stay healthy and prevent diseases. So keep sending your questions, and we will certainly try to include them in our next show. Till then, stay at home as long as you can, or as much as you can. Eat healthy, sleep well, keep giving your mind and soul a daily dose of positive thinking, and don't forget to maintain personal hygiene and social distancing to protect yourself and your loved ones from the COVID-19 disease. Till then, goodbye and see you soon. Thank you so much, Dr. Rajpurohit, for your. Thank you so much. Thank you.